Oppo 837. I'm unable to identify, and the video is also not on. So हाँ, वीडियो भी ऑफ है और प्रभाकर जी, प्रभाकर के नाम से आए हैं इनका। आप अपने आप को, आपका वीडियो भी ऑन कर लीजिए और अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आपका शेयरिंग या क्वेश्चन जो भी है, या अनम्यूट कर लीजिए आपको। Happy magical morning. happy magical morning. हैप्पी मैजिकल मॉर्निंग दीदी। Happy magical morning. बोलिए। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? No, I have no question. I have no question. अच्छा, ठीक है, ओके। एनीबडी एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ है, या किसी को कोई शेयरिंग करनी है तो वी स्टिल हैव जस्ट 2 more minutes, rather not even 2 minutes now. So Ruchi, I think there is nothing on the question point or the sharing point. I think you can start. Right, I'm just posting the links on the two groups. Are you good to? हाँ, I will just. Okay, okay. Yeah. No problem, no problem. So how was it yesterday? सब कल का सबका कैसा दिन रहा? We had done the money magnet. Yeah. Money magnet is generally a day when you know उसके next दिन तो sharings होती ही है। जैसे last class में मेरी थी खुद की कि my daughter and I were sitting and she is actually pursuing her baking course, an advanced diploma, and in baking and pastry arts. So उसको because she has to make, मतलब she has to use the egg. Generally हम लोग egg घर में खाते नहीं हैं, but क्योंकि वो एक course का मॉड्यूल है जिसमें एग चाहिए, तो वी हैड टू मेक टू replicate. I had to replicate a kitchen of mine in which I had to give a separate oven, a separate mixer, a separate churner and everything to her. So we were discussing on that, and that day only हम अपने, मतलब my neighbor, हमारे भैया हैं, उनसे बात कर रहा था कि ऐसा है। तो to my surprise, Ruchi अपने प्रेरिका was with me and she was just telling uncle कि uncle मैं देखो ऐसा ऐसा कर रही हूँ and I'm making a separate thing. तो बोले मेरे पास तो oven extra पड़ा ही है, तुम वो क्यों नहीं use कर लेते हो? And he gifted the oven to Prerika. So this was one good, without any effort. When you get a thing also, it is as good as like you are pulling, you are just pulling money or pulling you are taking it as a magnet. तो वो oven जो एक gift का था, that was also a money saved for us, and it actually solved the purpose for which Prerika was looking the oven for. So this is how generally money magnets में तो messages और sharings बहुत रहती है. अगर कोई नहीं है तो बाद में. Yeah, I just wanted to know, जैसे कि बोला कि कोई चीज का pending है or there's a shortfall for that amount that you want, and but if you don't have a bill that where you can write thank you for the money, so what do you do about it? You can even make one by hand. Okay. Just make And then one by just hand and just write thank you for the money, because you know कि कितना है आपके पास में और कितना due है. So if suppose 10 lakhs you have to get and you got about 7-8 lakhs, so bill पे कैसे रहता है ना, due 3 lakhs. So वहाँ make it a handwritten thing. जितना आप उसको विजुअलाइज करने के हिसाब से आप जितना उसको ऑथेंटिक बना पाएंगे उतना अच्छा रहेगा. सो इफ यू कैन राइट डाउन द डिटेल्स कि किसके लिए आपको चाहिए एंड वेयर डज दैट मनी हैव टू गो, ऑल दोस डिटेल्स यू पुट डाउन ओवर देयर ऑन दैट. इट्स अ सेल्फ मेड बिल, and just on that just write thank you for the money. So thank you for the money goes across or just on the top or down? Anywhere. That doesn't matter, as long as, see, all these words and everything is a very small part of it. The bigger part of it is the feeling behind it. So the minute you start feeling thank you so much for the money which is due, you don't even have to write so much. If you just write thank you for the money, that is more than enough, right? Because your feeling is coming in that I'm already showing my gratitude to this extra 3 lakhs or 4 lakhs which is due and which will be coming.
That's more than Okay. enough. Thank you so much. Yes. Lovely. So next 2 days or 3 days, we will be spending on relationships, depending upon how much time we really require for it. We have done so far the magic rock, writing our gratitude, writing our dreams and desires. Then we did 2 days on health. Then we have done 2 days on money. And now we will be starting on relationships. Okay. And after this, we will be going more again back to our dreams and desires, as well as some magical tools, जिनके बारे में book में बीच बीच में आता है. But now we're going to club them all together towards the end. Because एक जो चीज होती थी हमारे past participants के साथ कि 28 chapters करने के बाद में 28 practices करने के बाद में we would get very overwhelmed कि क्या क्या करें, कुछ छूट तो नहीं जाए, and you start feeling that fear that I shouldn't miss out on something. So what we will do in the last 2 days is we will discuss the various magical tools that are there, and then you can decide for yourself. आप अपने लिए decide कर सकते हो कि आपको दिन भर में क्या क्या करना है. रात को सोते समय magic rock चाहिए, सुबह उठते ही अपने gratitude लिखना, 100 footsteps, magical to-do list, various different things that you can plan out for yourself all through the day. So this is what is going to be the whole agenda. This is what we have covered so far, and this is what we're going to be doing in the next. Today is the 8th. So 8th, 9th, 10th, 11th, we have exactly 4 days to go. This is what we will be doing in the next 4 days. So today we're going to start with relationships. Okay. And relationships, which we have divided into 3 different parts. Relationships that are working very well. सब ठीक ठाक चल रहा है, उसमें आपकी कोई अनबन नहीं है. You love these people love you back, सब कुछ बढ़िया चल रहा है. But as a way कि हम इसको granted नहीं लेने लग जाए, today we will be doing for relationships that are going well. Then we will look at relationships जिनमें हमें improvement चाहिए, and then those relationships in which we want to completely forgive. So we're going to be looking at it at 3 different stages. First, where everything is going well, सब hunky dory है, सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, but we should just be a little concerned, or we should just be a little mindful कि ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे we start taking these relationships for granted. So today we are going to be doing that. Then we will look at relationships जिसमें थोड़ी बहुत अनबन चल रही है, थोड़ी बहुत खिटपिट चल रही है, and उसको हमें ठीक करना है. So we will look at these relationships. And then third, we will look at relationships where forgiveness is very important, where there has been some hurt, and now we want to get that negativity out, and we want to forgive these people because these people also came with some lessons for us. They taught us some things, so we're going to concentrate on that. So this is how we're going to even break up the relationship. So first chapter, today's chapter is very, very simple and very, very easy. So we're going to be doing the magical relationships. Okay, I'm just going to start sharing my screen. This is chapter number 3. For those of you who are doing it for the first time, you can read chapter number 3 again in details. I will be reading a part of it with you today, but a little more you can read on your own. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one would see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. और ये बात तो हम सब मानते हैं कि जितनी हमें खुशी होती है जब हम अपनी खुशी 4 जनों से बांटते हैं, वही खुशी हम अपने आप में रखकर कभी उस चीज से उतनी खुशी नहीं हो सकती है. समझ लो आपने कोई अचीवमेंट किया है, आपको कोई अवार्ड मिला है, या कोई भी आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया है, जब तक आप 4 जनों से उसको शेयर नहीं करते हो और 4 जन वापस आपको बोलते नहीं है अरे वाह गुड जॉब, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, उस चीज को करने का मजा ही नहीं आता. बड़ी सुंदर सी पेंटिंग बनाई है, चलो पेंटिंग आर्ट ये सब के बारे में नहीं जाते हैं. अगर खाना बनाया है और एक अच्छा सा डिश बनाया है आज,
और आपने उसको बड़े सुंदर ढंग से प्रेजेंट किया है, और फैमिली वाले आते हैं और बस खा के चले जाते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ बताते भी नहीं है, तो आपको समझ नहीं आता कि आपने जो किया है वो अच्छा था या नहीं. सो वी ऑल लुक फॉर some kind of a feedback from people. I'm not saying कि आपकी डिश उसी पे डिपेंड करेगी कि जितनी वाह होएगी, आपको खुद को पता है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब 4 जन मिलके खुशी से खाते हैं, चलो कुछ बोलते भी नहीं है, कई जन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, चलो अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बना है, लेकिन आपको समझ आ जाता है कि जब वो डिश आपकी पूरी साफ हो जाती है, ऐसे लगता है कि जैसे वो डिश में कुछ था ही नहीं, so you know your family has enjoyed what you have made. So we all want this validation, we all want this appreciation, we all want this love to be reciprocated. So now what do we have to do in turn? Remember, gratitude is all about giving first and then receiving. तो अगर किसी रिलेशनशिप में आप कुछ दे ही नहीं रहे हो, तो उस रिलेशनशिप से रिसीव करना is not very good, और वो होएगा भी नहीं. So first and foremost, we have to just go back and give. So today's chapter is all about giving gratitude, showing your gratitude in small ways in which you can make other people feel special. Don't wait कि ये तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं है, ये तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है. Don't worry about that. Today is your day just to give. And what you give, and what you give with your whole heart, you will receive back in leaps and bounds. But today we will not worry, we will not calculate, we will not do anything. हमें पता है हमारे कौन से relationships हमारे लिए बहुत important है, और उन सारे relationships के लिए, और at least 3 relationships के लिए today, because magic number is 3 relationships we will only selflessly give. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. Actually, this is the first chapter that she starts with. The first chapter is writing your gratitude. The second chapter is Magic Rock. The third chapter, but that is actually the first chapter on where do you apply gratitude. Relationships is the first place that you apply it. To receive the life of your dreams, it is vital that you understand how your relationships affect your life now, and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. So we've made our list of dreams and desires, and in that probably we've said that we want to have a very peaceful retired life, या फलाने फलाने के साथ में हमें ये करना है, या we want our sons and daughters to be settled in good education, good marriages, जो भी है. So we have some dreams and desires which are related to our relationship. So today we're going to be working on that. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. So now this is not just something जो हमारे ग्रंथों में लिखा है या सिर्फ gratitude की book में लिखा है. Science is also confirming कि जिनके relationships healthy हैं, close हैं और बहुत ही अच्छे हैं, they have very good relationships and they are more connected to their family and friends, they have a much favorable life. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every complaint about another person, whether in thought or word, there has to be 10 blessings for the relationship to flourish. Very, very important. And what is this? भैया बहुत अच्छे से समझाते हैं, but since I'm talking right now, it is about आप withdrawal क्या कर रहे हो. अगर आप अपना समझो कि एक emotional bank balance है, which is with your relationship, और 3 जनों के लिए सोच लो कि आपने इन 3 जनों के साथ अपना अकाउंट खोला है, तो every gratitude you give is probably 10 rupees. And every complaint that you make is about 100 rupees that you withdraw from that relationship. So आपको पता चलेगा कि कई relationships आपके negative bank balance में ही चल रहे हैं, because आप gratitude तो दे ही नहीं रहे हो, लेकिन complaint पे complaint करे जा रहे हो. And look at the ratio, 1 complaint is equal to 10 gratitude. मतलब 10, अगर एक बार आपने किसी के बारे में complain करी है,
तो उनके लिए आपको 10 चीजें अच्छी बोलनी पड़ेंगी अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए, not even to increase, this is only to maintain the balance. Any less than 10 blessings for every one complaint and the relationship will deteriorate, and if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Now remember that the author is an Australian author, and so it is easy for people outside to say कि हाँ भाई चलो कुछ नहीं हो रहा है हमारे relationship में, let's end it in divorce. We don't give it so much time, they don't work on it so much, but here we definitely believe in working on our relationship. So just keep in mind कि अगर वो एक कंप्लेन करी है आज की, गीला तौलिया हमेशा बेड पर ही छोड़ के चले जाते हैं, that's one complaint. For that one complaint you have to give 10 things that you're grateful for that person. And it was a very funny sharing that I had with one of my first participants in one of the batches. She said कि किसी friend के साथ मैं बात कर रही थी और मेरे मुंह से निकलने वाला था some complaint. फिर मैंने बोला कंप्लेन तो मैं कर दूंगी बट 10 चीजें अच्छी उनमें अभी कहाँ खोजने बैठूंगी, चलो कंप्लेन ही नहीं करती हूँ. इसी बहाने आपका कंप्लेन करना कम हो जाता है. And remember what we had read also when we were reading about money, that gratitude is riches, complain is poverty. So if you don't want to live a life which is poor, not just poor in terms of money, but also poor in terms of relationships, then we have to stop complaining. There was another participant who had said that she has made Sundays a no complaint day. So no matter what happens on a Sunday, कि बच्चों का रूम गंदा है, घर पूरी तरह से बिखरा हुआ है, कोई टाइम पे उठ रहा नहीं है, कोई टाइम पे खा रहा नहीं है, कुक लेट आया है, मेड नहीं आई है, जो भी होए, she said संडे को मैं एक दिन निकालती हूँ अपना sabbatical, जो बोलते हैं ना हम एक दिन का ब्रेक लेते हैं. So she said, I have taken a break, that Sunday will be my no complaint day. And that is such a good way to start, to say today, no matter what happens, is a no complaint day. Because we also do these things. We say no sugar day, we say no milk day, we say no grain day. तो जब हम health के लिए ये सब कर सकते हैं, to make out our, or to clear out our digestive system, this is for our mental health. So we say one day in the week is going to be a no complaint day. So no matter what happens around me, I will not complain. Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. Gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. Now, what is beautiful is कि आपकी रिलेशनशिप में बदलाव तो आएगा ही आएगा, लेकिन इन द बार्गेन साथ साथ में क्या होएगा, आप में खुद में आपको लगेगा कि यू आर फीलिंग सो मच हैप्पियर. क्यों? क्योंकि आप कंप्लेन करना बंद कर दिए हो. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, kindness, to the point where you won't even recognize yourself. So gratitude के साथ क्या होता है? Not only will you start feeling happier, but ये सारी जो चीजें हमारी missing होती है एक relationship में, we stop having patience, we stop understanding the other person, we stop being kind to the other person. What do you mean by being kind? कभी कभी जो चीजें हमें बोलनी नहीं है, गुस्से में हम वो चीजें भी बोल देते हैं. So we stop being kind in a relationship. So when we start practicing gratitude, all these things also start coming in. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you're truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person, because you love the person as they are. And we do not put any conditions. I will love you if you get up in the morning and do this. I will love you if you drink your milk on time. I will love you if you come back from office on time. We have no conditions for that. So the minute we stop putting those conditions, we unconditionally begin to love. You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. उनमें इतनी अच्छाइयां हैं और आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से उनकी अच्छाइयों पर ही है कि उनके बारे में कंप्लेन करना तो आप भूल ही जाओगे.
In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. इतनी ज्यादा उनमें अच्छाई आप ढूंढने लगोगे या देखने लगोगे कि छोटी छोटी जो चीजें हैं आप जो इरिटेट करती हैं उनके बारे में, आप उन सबको देखना ही बंद कर दोगे. And I will say, the best time to go back to is to go back to your courtship period, the time that you have got engaged and before you are going to get married. उस टाइम पे क्या होता है, सामने वाले की हर चीज आपको बहुत ही सुंदर लगती है. सामने वाला अगर लेट आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाला आपको 10 बार फोन करे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाला अगर आपकी बनाई हुई चीज की बहुत तारीफ करे या बिल्कुल तारीफ करे ना करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन ड्यूरिंग दैट कोर्टशिप पीरियड we love. So today is going back to those memories. How did I really feel about this person at that time? We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasure. So we truly feel alive. किस टाइम पे हमको बहुत अच्छा लगता है? Only at that time जब हमारे hearts में हमें लगता है जैसे कि treasures भरे हुए हैं. और ये treasures क्या है? ये treasures हमारे relationships के हैं. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your own life. आप अपने ही life को harm कर रहे हो सामने वाले को complain करके. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. So this is again very, very important कि जितनी भी कड़वाहट आप सामने वाले के लिए बोल के निकाल रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, वो एक्चुअली आप अपने लिए ही वापस से अट्रैक्ट कर रहे हो. बिकॉज व्हाट यू गिव आउट इज व्हाट यू विल गेट इन. तो आपने जो डिपॉजिट्स किए वो ही विड्रॉल्स आप कर सकते हो. अगर एक रिलेशनशिप में आपने सिर्फ कंप्लेन का डिपॉजिट किया है तो जब भी आपको उस रिलेशनशिप को देखना होगा तो वो सारा नेगेटिव में ही चलेगा, वहां पे पॉजिटिव कुछ नहीं रहेगा. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. And I'm very sure कई जनों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बट मैं ही करती रहूं सब चीज अपने साइड से, सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा है. हम ये जाके झगड़ा बैंक से नहीं करते हैं, हम बैंक को जाके नहीं बोलते हैं हम ही खाली डिपॉजिट करते रहेंगे क्या, आप क्यों नहीं इसके अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं. नहीं. इफ यू रिमेंबर और इफ यू नोटिस इन योर बैंक स्टेटमेंट्स, एवरी 6 months देयर इज अ स्मॉल अमाउंट व्हिच इज क्रेडिटेड बैक फ्रॉम द बैंक. तो अगर आपने ₹1,00,000 का डिपॉजिट किया है तो उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट आपके बैंक में 6 महीने के बाद में आपके अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा. बट वो इंटरेस्ट बहुत छोटा होता है. ₹1,00,000 के बदले में आपको ₹1,00,000 वापस नहीं मिलते हैं. बट ये ₹1,00,000 आपके ही ₹1,00,000 हैं. सो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ. सो जस्ट थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ बैंकिंग पर्सपेक्टिव. एवरी 6 months अगर ₹1,00,000 के बदले आपने ₹10,00,000 का डिपॉजिट किया है तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होएगा वो 10 लाख के हिसाब से होएगा. सो वॉट एवर यू आर गिविंग इन अ रिलेशनशिप इज वॉट यू आर डिपॉजिटिंग एंड वॉट यू विल रिसीव बैक. भले ही वो अमाउंट बहुत छोटा होए बट यू विल डेफिनेटली रिसीव बैक एंड वो अमाउंट विल डिपेंड अपॉन आपने कितना डिपॉजिट किया है. They knew for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? अक्सर हम क्या करते हैं, sorry, 1 second, let me mute everyone. अक्सर हम क्या करते हैं, बच्चे जब कुछ अच्छा करके आते हैं तो हम बोलते हैं I love you so much, तुमने मेरी आज टेबल क्लियर करने में मदद कर दी. एक्चुअली वो उतना बोलने का जरूरत ही नहीं है. जस्ट से आई लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग द टेबल. आई डोंट लव यू बिकॉज यू क्लियर्ड द टेबल. आई लव यू बिकॉज यू आर माई चाइल्ड एंड आई गिव यू अनकंडीशनल लव. Because you have helped me clear the table, I'm giving you gratitude for that. And this is also very, very important to understand the difference between the person and the behavior. कई बार क्या होता है,
हम पर्सन के बिहेवियर के अनुसार उसको बोलते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हो या प्यार नहीं करते हो. But the person is different and the behavior is different. And especially when you're talking to your children, keep this in mind. Irrespective of whatever their behavior is, I still love you. तुमने अपना रूम साफ नहीं रखा, मैं तुमसे तुम्हारे रूम साफ नहीं रखने के लिए बहुत नाराज हूँ. But I still love you. So there is a difference between the behavior and the difference between the person. कई बार क्या होता है, ये दोनों चीजें इतनी जुड़ जाती हैं कि हम दोनों में डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते हैं. हमें लगता है वो पर्सन सिर्फ उसके बिहेवियर के वजह से है. तो अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चा सब कुछ अपना टाइम पे कर रहा है तो मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ, और एक बच्चा जो हर चीज उल्टा कर रहा है, actually that person needs more of your love and attention. So keep this in mind, that distinguish between the person and the behavior. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. So remember, today we are doing only relationships that are working well. Today we are not working on relationships जहां थोड़ी सी भी खटपट है, और relationships जहां बहुत ज्यादा तनाव आ गया है. हम इसे stages में लेंगे. Today we are only going to work. Your microphone is muted. Sorry. Yeah. So today we are only going to be work on relationships that are working well for us. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. And jitna aaj aap unko gratitude doge, maybe in the way you talk to them, maybe if you say something to them, maybe you give them something, but most importantly today's activity is to write something down. Can I just request everyone to please keep your phones on mute? Just keep checking. कई बार आपके systems अपने आप unmute हो जाते हैं. Just keep checking, please. Miss Seema Jain, if you can just mute yourself. बार-बार unmute हो रहा है. Thank you so much. Yeah. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, your father, boyfriend, business partner, sister. You might choose your best friend, grandmother, uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. अब आज क्या करना है, इन 3 जनों के photographs को आपको अपने आंख के सामने रखना है, और फिर उस फोटोग्राफ के साथ उसको सामने रखकर you will write about 10 things that you are grateful for to each of the people. And now it's very easy to get these photographs because most times ये हमारे मोबाइल पे ही होते हैं. तो फिजिकली अगर आपके पास वो फोटोग्राफ नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट वो उस जन को आपको आपके आंख के सामने रख के you will give 10 things of gratitude for this person. Once you have selected your 3 relationships, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talent, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for you, or supported you. अब इतनी सारी examples दे दी है, या तो उनके talents के लिए आप grateful हो, या उनके कोई physical feature के लिए आप grateful हो, या आप उनके साथ मिल बैठ के कुछ करते हो तो उसके लिए आप grateful हो, या कुछ ऐसी memory है जो आपने उनके साथ share करी है, आप उसके लिए grateful हो. So 10 चीजें आज आप इन 3 relationships के लिए निकालोगे. After you've spent some time thinking about what you're grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are most grateful for. यहाँ पे 5 दिया है, but I'm insisting कि आप 10 लिखो because अब हम revisit कर रहे हैं gratitude, which means
कुछ हद तक हमने ये एक्सरसाइजेस ऑलरेडी कर ली है. एंड दोज हु आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप 10 नहीं लिख सकते हो, you can write at least 5 things that you're grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic word. अब इसको लिखना कैसे है? Thank you so and so, मतलब उनका जो नाम है. For what, वो reason लिखना वहां पे बहुत जरूरी है. So for example, if I would like to say thank you to my sister, yesterday I had some delicious food at her house, so I will write that. Or I will generally write thank you so much for my sister because she makes such good food and always makes sure that I enjoy her cooking. Or many such things that you can write. For example, thank you John for always making me laugh, or thank you mom for supporting me through college. So इन 3 जनों को आपको लिस्ट बनानी है, और 5-5 नहीं 10-10 चीजों की लिस्ट आपको आज तैयार करनी है for these 3 people जिनके साथ आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, but today you want to take an opportunity, you want to pause, you want to make sure कि these relationships you don't start taking for granted, because wherever gratitude becomes lesser, वहीं पे the things start getting haywire, और वहीं पे चीजें गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं. So today's activity is very very simple. 3 people, their photographs, keep it in front of you and write a small paragraph. Now it's not necessary कि आप ये paragraph उनको भेजो. That is not important. It's not like you have to share it. But आप share करोगे तो आपको भी मजा आएगा और उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा. They may not respond. अब यहाँ बैठ के expect मत करना मैंने तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी थी अपने हस्बैंड को कि मैंने क्या क्या चीज के लिए आई एम ग्रेटफुल टू देम, और सामने वाले ने तो कुछ बोला भी नहीं पलट के. Remember, we are not doing it for the other person. We are doing it because we want to increase our bank balance. Okay, this is only about our deposits. We are not looking at कि बैंक अपने साइड से कितना इंटरेस्ट दे रहा है, या मैंने लाख रुपया दिया बैंक तो कुछ डाल ही नहीं रहा है वहां से. We are not going to look at that. This is only for our own selves. So look at 3 relationships which are doing well, which are flourishing, which are good. But today we will take a pause and we will give our gratitude so that what is happening will become even better. Okay, so we are only looking at baking from good to better to best, right? So this is the order we will be working in. Yes, Bhaiya, would you like to add something? Yeah, do you, I'll just quickly take this question and then you can add. Can it be done in the gratitude diary? It can be done anywhere because you are just writing it for your own self. आप चाहो तो अपने एक पेपर पे लिख सकते हो, आप चाहो तो एक उसका कोलाज बना सकते हो, उसके पर्सन का पिक्चर वहां डाल के और 10 चीजें उसके नीचे लिखकर, जो पिक कोलाज वाला एक ऐप होता है उसमें डाल के लिख दो. मेक इट लाइक अ पिक्चर फॉर योरसेल्फ. कभी भी अगर थोड़ी सी भी खटपट होती है उस पर्सन के साथ में, तो जस्ट गो बैक टू दिस पिक्चर एंड यू विल इमीडिएटली नो कि मुझे कंप्लेन नहीं करना है, बिकॉज ये 10 चीजों के लिए तो आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस पर्सन. सो इट विल ऑलवेज हेल्प यू to write it down. Okay, yeah, Bhaiya. Yeah, so here जैसा कि रुचि ने बताया कि ये वो बैंक है जहां पे देखो डाल तो आप सिर्फ 10-10 रुपए रहे हो. ओके, 10-10-10 करके जब आप 10 बार डालते हो तो आपको एक विड्रॉल मिलता है, वो भी 100 रुपए का, और वो बैंक बैलेंस 0 कर देता है. सो वी आर नॉट हियर ग्रेटिट्यूड की बैंक में हमको इतना डिपॉजिट करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो विड्रॉल के टाइम में सोचना पड़े कि यार क्या ये जरूरी है विड्रॉल. अगर ये विड्रॉल जरूरी है तो ही होगा, बट जब व्हेन यू आर इन ग्रेटिट्यूड वो जरूरी आपको याद आता ही नहीं है. अब ये कोरोना पीरियड में जैसे ये स्वीट और सार, अगर आप समझना रिलेशन था स्वीट एंड सार, कोरोना पीरियड में एक चीज समझ में आई है आपको, जो एक वो जो ग्लास शॉट जब काढ़े का लेना पड़ता है ना, तो आप पहले ध्यान रखते कि भाई एटलीस्ट 2 बिस्किट या 1 चॉकलेट, या मैं कुछ एक ऐसा रखूं कि काढ़ा लिया और वो चॉकलेट खाया. तो एक सार थिंग के साथ में आपको स्वीट खाना जरूरी है. यहाँ पे यही है कि ये जो सार थिंग है इसको अपने को रखना ही नहीं है, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहे ऐसा आपने उसके लिए कर रहे हैं. इट इज फॉर आवर गुड. लिया, खाया, ओके. सो दैट इज हाउ इट हैज टू बी रेसिप्रोकेटेड. कि जब रिलेशनशिप है उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, उसको जब ग्रेटिट्यूड देते हैं तो
कुछ रिलेशनशिप में वो जो मैग्नीफाइंग इफेक्ट आता है, आज अगर जब आप अपने बच्चे को, रुचि हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो वेरी वेल कि माय एडिशंस आर जस्ट लाइक यू नो वन पॉइंट टू इट। बच्चे को तो अनकंडीशनल लव ही कर रहे हैं ना अपने। संडे का दिन अगर नो कंप्लेन डे है तो कल संडे आने वाला, लेट अस कीप इट अ नो कंप्लेन डे ओनली, कि जब हमको कोई कंप्लेन ही नहीं मिले, देयर इज नो कंप्लेन एट ऑल व्हिच वी हैव टू डू। बच्चा जो कर रहा है लेट हिम डू, अच्छे से करने दो। उस दिन उसको ये रियलाइज हो जाए कि यस उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसको साथ में जब अगर वो बैग ठीक कर रहा है तो उसको जब आप हेल्प करो कि बेटा ये ले लो, आई विल कीप इट लाइक दिस, आई विल कीप इट लाइक दिस फॉर यू। सो दीज थिंग्स विल एड, एंड बच्चे बड़े आपके जो स्पाउस है वो भी ये समझेंगे कि यार आजकल इसने बोलना ही छोड़ दिया। क्या हो रहा था, जो कोर्टयार्ड पीरियड रुचि ने बताया था, कोर्टयार्ड पीरियड में आपको सब चीजें अच्छी लगती है सबकी, यस वो वैसे ही होता है। वो लेट आ रहा है तो भी आपके पास में कंप्लेन नहीं है। वो आपके लिए जो गिफ्ट लाया, चाहे वो गिफ्ट काम का है या नहीं है, बट यू आर सो ओवरवेल्म कि चलो मेरे गिफ्ट आया। और वही अब आफ्टर दिस इयर्स हैव पास्ड, व्हाई इज इट, मतलब उसको हम अपने फिल्टर क्यों कर रहे हैं, क्यों हम उसको कंडीशंस में डाल रहे हैं। वो जो अनकंडीशनल लव उस टाइम था वो अभी क्यों नहीं रह रहा है। लास्ट टाइम मैंने एक गाना गाया था कि आई जस्ट सिंग इट हियर आल्सो, कि इन द कोर्टयार्ड पीरियड जब वो जाती है तो एक गाना आता है, जाती हूं मैं जल्दी है क्या, धड़के जिया वो क्यों भला। अब वो था कोर्टयार्ड पीरियड, और अब जब वो बोलती है जाते मैं, ओके बाय सी यू टाटा, कितनी देर में आओगे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं करके आ जाना। क्या हुआ रुचि? मैंने बोला जल्दी जा। वही, और वो मतलब वो मैं मतलब इसमें जो गानों का कॉम्बिनेशन जो था कोर्टयार्ड का, मैं आई 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 आजा, और अब तू जाई 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 जा जा, मतलब व्हाई इज इट दिस, व्हाई इज इट दिस, व्हाई देयर शुड बी दैट सो मच ऑफ अ शिफ्ट। नहीं भाई, वो शिफ्ट हमको नहीं चाहिए। आज भी अगर वो जा रही तो कितनी देर में आओगे, अगर आप वो एक पूछ लेते हो तो कई बार उनको तो यार क्या यार अभी तक तो गया नहीं और तुमने आने का पूछ लिया। नहीं, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, जब आप आओ तो आपके लिए ये सब चीजें मैं अपने हिसाब से कुछ रेडी करना चाहती हूँ कर लूं। तो वो एक वेट होता है, वो एक अलग वे ऑफ पुटिंग होता है। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दैट कोर्टयार्ड पीरियड, और उसको एक दिन जी के देख लो कि देयर इज नो कंप्लेन, आप जैसे हो आप उस टाइम पे भी वैसे थे। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि आप बदल गए, कई बार ये कंप्लेन होता है कि आप बदल गए, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। अरे तो जब आप उनको बोल रहे हो कि पहले आप ऐसे नहीं थे, तो उनके लिए भी तो होगा कि तुम भी वैसी नहीं रही। लेट्स पुट इट द अदर वे आल्सो, कि उनको भी ये लग रहा होगा कि तुम भी वैसी नहीं रही। तो ओके, फॉरगेट एवरीथिंग, लेट्स मूव 10 15 20 25 30, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, बट लेट्स टेक बोलते ना, गो इनटू द फ्लैशबैक, enjoy it for one day, and yes, that one day itself you will see a lot of magic happening, कि फिर आपको लगेगा कि यार ये वही चीज है जो मैं जीना चाहती हूँ, and then that will become a recurring effect. So working on relationships, as Ruchi told कि in foreign countries तो नहीं चल रहा तो चलो छोड़ो, अपने यहाँ पे वो नहीं, अपने संस्कार वैसे नहीं है। We have been nurtured कि नहीं यार, गलतियां सब जगह होती है, थोड़ी बोली सब जगह होती है। यू नो द जो वेव बैलेंस होता है कभी इधर नीचे कभी इधर नीचे, कभी इधर नीचे कभी इधर नीचे, उसको संतुलित कैसे बनाए। और अगर वो संतुलित रहेगा तो भी अच्छा नहीं है। हार्ट का ग्राफ अगर आपका ऐसे चलने लग जाएगा तो कुछ नहीं है। लेट इट बी लाइक दिस, लेट द ग्राफ बी गिव सम अप्स एंड डाउन्स, तभी उसको जीने का भी मजा आएगा। जहां वो स्ट्रेट लाइन बन गई तो डॉक्टर यही बोलेगा ठीक है भाई इनको ले जाइए। नहीं, वी वांट इट विद अप्स एंड डाउन्स सो दैट वी एंजॉय द जर्नी कॉल्ड लाइफ, दैट वी एंजॉय द जर्नी ऑफ रिलेशनशिप। तो इसको यही समराइज करते हैं। आज के लिए खाली एक ही चीज है, आप जैसे रुचि ने बता दिया, रिलेशनशिप्स के बारे में आपको लिखना है, और आज से ये दिमाग में ध्यान में एकदम रख लेंगे अपने कि हमको वो 10-10 रुपए डिपॉजिट करने हैं। एक कंप्लेन, एक नेगेटिव थॉट, कुछ भी ऐसा आया तो आपका वो जो 10 बेनिफिट्स है वो पूरा गायब हो जाता है। You are withdrawing 100. We are not here to withdraw 100. We are here to just deposit that small tens and make it thousands and lakhs in our relationships. Ruchi, I'm done. If there is any question, we can take it.
We can take any questions if they are there. Somebody on YouTube wants to know a picture of the magic check. I would request you to please join the WhatsApp group, because WhatsApp group में आया हुआ है, and otherwise you can just Google and see magic check of the universe, the magic book, और आपको मिल जाएगा. I was trying to see if I could respond back on YouTube, but वो हो रहा नहीं है. So this is just for somebody who asked on the YouTube that it's available on Google. You just have to write the magic check, copy the universe, any of these Google words will work, and you'll get a copy of it. No problem on that. So I hope everybody has identified the 3 people today. Let's not go overboard. Let's not say ki we'll do 5, we'll do 10, we'll do 15. Nahi, let's just do 3 people. But instead of 5, we will write at least 10 things about the person, because the minute we write 10 things, we will start feeling कि अरे गुस्सा होने वाली तो इनसे कोई बात ही नहीं है. इतनी चीजें हैं जिनके लिए we are so grateful to them, that what is the need to even look at these small complaints? It's like saying very simply, every rose has a thorn. So are you going to keep concentrating on the thorns that are there, or are you going to concentrate on the rose? So we are going to concentrate on the rose today. When we talk about the relationships that are not working out and there is ज़्यादा खटपट हो रही है और अब आप उसको improve करना चाहते हो, so at that time we have to keep in mind that every cloud has a silver lining. मतलब वो जितना भी अंधेरा हो, उस cloud में थोड़ी सी silver lining तो होती ही होती है. कल बड़े मजेदार एक बात हुई, and I would like to share it right now itself. Someone was tested positive in our family, and everybody else was feeling very upset about it and all of that. My niece came and she said, "अरे fantastic, 14 दिन बाद में इसका plasma donate हो सकता है." Now look at the silver lining that she immediately came out with, while everybody else was feeling कि अरे positive हो गया, and nothing wrong. He doesn't have to be hospitalized. कुछ नहीं है, mild fever है, cough and cold है, and सब ठीक हो जाएगा. अब 14 दिन के लिए quarantine तो करना पड़ेगा. And the first thought she had was fantastic. Now this person can be a plasma donor. So it's just about knowing at that moment how quickly can we change and look at the positive in the negative. And I should have saved up the story for tomorrow, but since it happened last evening, I just couldn't stop myself, and I was so happy at the way she immediately turned the situation around. So yes, negativity also has something positive in it. It's just that we have to start training our minds to start looking for it. वो हम भूल जाते हैं. But today we will only be talking about Suraya ji, that I will not want you to do today, because that is something which we will be doing day after. Okay, so today don't write that. Today write about that day after. Today we will only concentrate on 3 relationships that are working well, and we're very happy in these relationships, but we want to make it better. So like Bhaiya was also saying, we want to go back to our romance of the courtship period and not the everyday ka khatpat. Okay, so we will start looking at that. Go back to a baby picture of your child. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because कई बार क्या होता है बच्चों के साथ में, especially if they're teenagers, we start looking at everything that they are doing wrong. So go back to a baby picture of theirs and look at how cute they looked at that time. इतने sweet लगते थे, भले ही 10 बार चीजें गिराएं या 10 बार चीजें खिंडाएं, हमें कोई problem नहीं होता था. So go back to those days when we used to feel so much of love for our children. So go back to those memories. They will just help you to start feeling the love all over again. And it is very normal that we have these issues with our kids, or we have these problems with our spouses, our in-laws, or our parents or siblings. It's very, very normal that we have these things. But today's day is only to give. Today's day is only to deposit. We are not looking at any withdrawals. जितना deposit होएगा आपके उस bank balance में, उतना आराम होएगा आपको किसी time पे भी withdraw करने के लिए. And ऐसा नहीं है कि 10 लाख डाला है तो एक ही बार में आपको 10 लाख ही निकालने हैं. धीरे धीरे करके कभी कभी अगर withdrawals हो भी गए तो problem नहीं होएगा, आपका balance negative में नहीं जाएगा. It will remain in positive. And then you have an opportunity to keep putting back more and more gratitude in that. Should the person be present in the world today? Yes. Today's exercise is for somebody
who is present, because we will be doing another exercise where we will show our gratitude to the people who are no longer with us. So today it is only for the people who are there with us. And our closest relationships, look around, your closest relationship, जो आपके सबसे नजदीकी relationships हैं, उनके ऊपर ही concentrate करना है. Okay? जैसे रुचि आपने भी बताया ना कि बच्चों के साथ में टीनेजर्स में एक्चुअली एक प्रॉब्लम होता है, तो आई हैव समथिंग टू रियली शेयर. गर्वित इज इन हिज टीन्स ओनली. तो कई बार मैं उसको बोलता हूँ, बेटा तू अब इतना बड़ा हो गया है कि तुझे ये ऐसे 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 करना चाहिए. कई बार मैं उसको बोलता, तुम इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तुमको ये चीज अपने दिमाग में लाना है, तुम अभी छोटा है. तो मैनी टाइम्स ही टेल मी, पापा एक चीज तो क्लियर कर दो, मैं बड़ा हूँ कि मैं छोटा हूँ यार. मैं कितना बड़ा हूं और कितना छोटा हूं ये आप ही क्लियर कर दो. कभी आप बोलते हो कि तुम बड़ा हो गया, अब तुम ऐसे 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 ये करेगा. कभी आप बोलते हो तुम इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तुमको ये चीज दिमाग में लाना है. तो मैं करूं क्या? सो दिस इज वन टिपिकल थिंग विच इज इन एवरी रिलेशन. जब आपके बच्चों के साथ आता है तब तो होता है. तो आप लोग को जो एक वो ध्यान रखना है ना कि उसको किस तरह से पुट करना है. द किड्स आर मच स्मार्टर. अपने से ही फिल्टर्ड हुए, अपने ही जीन्स है. तो सोच लो अगर आप स्मार्ट हो तो वो तो आपसे स्मार्ट होने ही चाहिए. We should accept it, agree to it, and that is why when we are talking to them specifically at times, तो ये जो वो बड़ा है या वो छोटा है, very big confusion. So it has to be put in such a way कि बेटा देख कुछ कुछ चीजों के लिए तू अब बड़ा हो गया, तेरी एज जो है, you know, you have become from a seed to a herb. But before going into the tree, let's not plan for the tree right now, and let's not plan that you are still a seed. You are in the herb stage wherein you have started giving flowers. So concentrate more on the flowers, spread your fragrance. As you grow ahead in life, you will start giving fruits also. तो उस टाइम पे तुम इतने बड़े हो जाओगे कि तुमको जो ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि अब तुम्हारे लिए ये तुम इतना बड़ा नहीं हुआ है. So you are not at the fruit giving stage right now, but you have started to blossom. So start spreading your fragrance to the world. This is how it should be. So, what? I said I love that metaphor. Thank you. From a flowers to fruits. Yes, Pushpa ji, you want to share something? Yeah, Raisha wanted to know that magic shaker डाला तो इसमें कुछ आया नहीं. So you please explain to her. She's sitting there. So sweet. Magic shaker के अंदर बहुत सारा love है, and that love is not visible. बहुत सारा thank you लिखा हुआ है. This is all invisible thank you. तो वो दिखता नहीं है. So if you have seen any of those Harry Potter movies, or if you have seen any of these movies where all this magic happens, so sometimes the person is not visible, but we know it is there. So in that magic ingredient, you have a lot of love coming from your mother, a lot of gratitude coming from your mother, and that is why it is called a magic ingredient. So is it okay if there is nothing inside it? So sweet. Yeah. I told her I just want to share one thing. You will be able to see only when you have all the good qualities. So sweet. Yeah, Mansi, I'll just take one question and then you can share. 5 years के बच्चे के साथ में no complaint day कैसे करें? अरे उनके साथ तो करना बहुत easy है. They're so sweet, they're so adorable. एक दिन अपने मन की कर लेने दो उनको पूरे ढंग से. बड़े बच्चों के साथ में हमारा ego आ जाता है, छोटों के साथ कहाँ ego आता है. So it's absolutely fine. There's no need to complain. थोड़ा late उठेगा, दूध थोड़ा देर से पिएगा, TV ज़्यादा देखेगा और क्या कर लेगा? और तो कुछ नहीं करेगा. तो 5 years तो is very easy to handle. Wait till your child grows up. I can only say that. Hello, Mansi. Yes. हाँ, thank you, मैम. एक मिनट, ये क्वेश्चन मेरा ही था. एक्चुअली क्या होता है, सबसे ज्यादा कंप्लेंट उन्हीं से ही होती है. तुम उठे नहीं समय से, तुमने ये नहीं रखा, तुम सुनते नहीं हो. इसलिए मैं बोल रही हूँ, छोटे बच्चे तो बहुत इजी होते हैं उनको संभालना. तो आप वो बच्चा सिर्फ 5 साल का है, थोड़ा लेट अगर आज उठ गया तो क्या हो गया? संडे मना ली उसने, सैटरडे को ही संडे मना लिया तो क्या फर्क पड़ गया? दूध अगर थोड़ा लेट से पी लिया तो क्या हो गया? अगर टीवी थोड़ा ज्यादा देख लिया, एक ही दिन की बात हो रही है ना, वी नॉट टॉकिंग अबाउट अ मंथ. तो एक दिन के लिए यू कैन डेफिनेटली मैनेज. Okay. Yes, that's why I'm saying wait till they grow up, then you will know how difficult it will be. Thank you. Yes, Mansi, go ahead.
Sorry, I stopped you a couple times. Yes. No, like I just wanted to share, though this is maybe relevant not today, but just a change that I experienced myself with the gratitude giving. Like me and my sister-in-law, we have a joint family, and there has been little whatever. Yeah. So my desk where I do hear this and do my gratitude is right outside her room. Where so as usual, I had got connected to the Zoom waiting for everybody to come in and put my AirPods, and I was ready. And then suddenly I hear फिर से इतना जोर जोर से सुन रही है कमरे के बाहर. It's early in the morning. And she was irritated. So I said, all right, that's it. So next day when I wrote my thank you, then I just wrote, thank you, Bhabhi, for making me realize that my AirPods are not connected. Right. So I was just amazed, because otherwise it would have irritated me throughout the day. Yes. So that was one small change which I saw in myself, and I was really happy. It's because a I've huge been change. Let me tell you, it's not a small change. It's a huge change. Okay. Yeah. These are the ones that we find even more difficult to handle. And the fact that you could turn it around and you could understand ki, yeah, it is actually a feedback for me that probably my AirPods are not connected. Probably I need to sit somewhere else because somebody else is sleeping. It's just a feedback. That's such a beautiful change. And thank you so much for sharing. So it's not a small thing. It's a very big thing. It's a very thank you. Thank you so much. Yeah. Lovely. Lovely. Thank you. And keep sharing. You know, when you share these things, तो खुद को भी समझ आता है कि ग्रैटिट्यूड में जब हम लिख रहे हैं, हम सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं लिख रहे हैं जो ठीक ठाक हो रही है. जिन चीजों में हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को उसमें शाबाशी भी दे रहे हैं. That, you know, yesterday something like this happened. I'm so grateful to myself, or I'm so grateful that I understood. So that gratitude is coming to yourself, which is a very, very big thing, you know. And very interestingly, just today in the morning, I wrote, when I was writing my gratitude, I wrote, I'm so grateful to myself that I have been waking up every morning and diligently going for my yoga. So you have to pat your own back. Sometimes you have to acknowledge gratitude for yourself as well, because who's getting up and going? Who made that shift to check whether the AirPods are connected or not? You did that. So please applaud yourself and give a lot of gratitude to your own self as well. That's a beautiful sharing. Thank you so much. Thank you. I would like to share something. Yes, yes. Sorry, Rinki, I can't see you. Is it possible for you to switch on your camera? Yes, thank you. Yes. Actually, you know, as she said, even I have a relation with my sister-in-law. It's not so good, but I always wish to, you know, mere bhabhi hai. We are living separately only. So I always wished to, you know, ke kuch to acha ho jaye, and I kept trying for that. But somewhere, you know, acha hua, and then again the same thing. Kuch misunderstanding ho gaya, and it's been like quite some time we are not in touch also. तो फिर कुछ दिन पहले मुझे ऐसे लगा I forgotten this gratitude thing. जैसे ही मैंने ये review set किया ना, तो मुझे याद आया, because usual practice में I was just doing thank you thing और magic rock and 10 blessings. ये relationship छूट गया था मेरे से. Money का थोड़ा करती हूँ, वो bills का सब, बस only little things I am in touch with. तो मैंने सोचा okay, जैसे revisit किया तो सोचा कि ठीक है, let's give gratitude to Bhabhi also. तो meditation में I used to give forgiveness and also ask for forgiveness कि हो रहा है. And luckily एक दिन क्या हुआ, उन्हीं का सामने से मैसेज आया कि I'm really very sorry, जो कुछ हुआ, अभी सिनेरियो इतना गंदा है, हम क्यों अपने रिलेशन को खराब है. जस्ट मैंने मन में उनको 4 दिन ग्रैटिट्यूड दिया, फॉरगिवनेस दिया और फॉरगिवनेस लिया. 5th डे उनका ही मैसेज मोबाइल पे आ गया. इतना बड़ा मैसेज जो मैं सोच रही थी मैं इन पर्सन करूं, मुझसे नहीं हो रहा था इन पर्सन. मैंने मन में ही उनको ये सब दिया तो उनका ही मैसेज आ गया. आई वाज सो हैप्पी कि हाँ, समथिंग इज वर्किंग समवेयर करके. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. यू नो, जो टेलीपैथी की हम बात करते हैं, दिस इज नथिंग बट टेलीपैथी. बट टेलीपैथी में आपने उनको बुरे विचार नहीं भेजे, टेलीपैथी में आपने उनको अच्छे विचार और फॉरगिवनेस भेजे. एंड बिकॉज ऑफ दैट it reciprocated. वो energy has traveled.
Thank you so much for sharing that, Rinki. Yeah, that's why I asked you now कि जो worst हो रहे हैं उन relationship के बारे में आज मैं करूँ या can I stick to my husband and my kids? Just today for the relationships that are working. Remember, we are revisiting gratitude, but we are still taking it step by step. Okay. So let's take it just step by step, and we'll do it. कल परसों में हम कर लेंगे. So no hurry. ये चैप्टर छूट गया था भाई, डेलिबरेटली एक्चुअली वांट टू डू इट नाउ अगेन. और ये जो चीज आप बोल रहे हो ना रिंकी, ये जो प्रैक्टिसेस है, इसीलिए वो लास्ट के 2 दिन हम लोग रखे हैं रुचि और हमने, कि ये जो टू डू लिस्ट है और जितने भी चीज जो लोग कर नहीं पा रहे हैं वो एक बार रिविजिट करके सबको बता देंगे कि अगर भेल खानी है तो उसमें कुरमुरे भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, ककड़ी भी चाहिए, इफ यू ईट प्याज, और वो चाट मसाला भी चाहिए और पूरी भी चाहिए, तब वो भेल बनेगा. खाली कुरमुरों से भेल का स्वाद नहीं आएगा. सो मैजिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स. It is that not that only if you write a magic check and you will start getting money. No, magic check has to be followed with gratitude, with your magic rock, with gratitude in your relationship. अब जैसा आपने बताया कि मैंने अच्छा लिखा उनके लिए, उनके पास चला गया, तो ये ही वो प्रैक्टिस है. जब आप उस प्रैक्टिस में जा रहे हो, जब आप मन से ही उनके लिए अच्छा सोचने लग गए हो, तो रुचि टोल्ड इट वेरी वेल, वो टेलीपैथी उनके पास में गए और उनका सामने से मैसेज आ गया. ये मैजिक नहीं है तो क्या है, इसको बिलीव करिए कि ये वो मैजिक है जो हम अपने लाइफ में लाना चाहते हैं. और ये जब छोटे मैजिक्स होने लग जाएंगे ना, तो आपका बिलीफ सिस्टम में क्लियर हो जाएगा कि आपका मैजिक चेक भी आ रहा है, आपका ग्रेटिट्यूड्स भी जा रहा है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो डिजायर कर रहा है वो हो रहा है. दिस ऑल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग पुट टुगेदर. Yes, definitely. It wasn't less than a miracle for me because ये चीज कभी होती ही नहीं थी कि वो सामने से मैसेज करे या सॉरी बोले. But just because of those 6-7 days of meditation में forgiveness, gratitude, I was really shocked and so happy कि ठीक है one step आगे तो गया करके relationship. Absolutely lovely. Thank you so much for sharing. And भैया ने इतनी भेल की बात बताई है, तो भैया तो पहले मुंबई से थे, मैं चेन्नई में हूँ, and भैया is now in Bangalore. Somebody asked, Sandeep's iPad asked, so I'm just and thank you Bharti for answering that for me. So I'm from Chennai and bhaiya now stays in Bangalore, but he is originally from Bombay. So when he described the bhel, we know it even better that he's totally from Bombay. Okay. So thank you so much, ma'am. Thank you so much, bhaiya. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ruchi, I want to. Yes. So somebody asked how to, they keep complaining about the children. So what I've started doing is I've started making them only the room police. One is the room police, one is like the kitchen, so that he eats on time. So then they tackle each other. Themselves. Yeah. So instead of complaining, they are just figuring it on them, by themselves. Yeah. Beautiful. How nice. And so cute that is. I can just visualize your son and your daughter as the room police and how my daughter is generally the room police because she likes to be in charge. Okay. So she makes sure that he keeps his books back in place and the room is back. So it's nice. That's so sweet. That's so nice. Thank you, Ritika. Thank you for sharing that. There's another thing that we do, which is called a gratitude jar. Like Ritika had showed the gratitude jars. It's very interesting to do it, especially with your child. So what you do is every time your child has done something for you, उन्होंने कुछ चीज आपके लिए अच्छी करी है, you just take that gratitude jar and you write it in that and put it inside the jar. और महीने के एंड में आप खोल के जब देखोगे तो you will realize उसमें कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए आप उनके लिए grateful हो. And we have to start identifying these really छोटी छोटी चीजें. कई बार होता है कि हमसे ये छोटी चीजें ही गायब हो जाती हैं. So we have to start putting back our concentration on all these small things. So you can use any of these techniques just to get better and better in your relationships. Yes. And hello. Yes. Yeah. Hello. Yes. Richa, is that you? Yeah. Yes. Hi, good Hi. morning, Ruchi. Good morning. It's really a very good thing because since from 20-25 days, I'm having a problem in my back side and it's paining whenever I get up in the morning. So while you're saying that you give a gratitude to the air that too
how that you are keeping fit and healthy and all. From 5-6 days I'm doing everything, I saw a positive thing that whenever I get up in the morning, my back is not paining a lot. Is not paining only. I'm feeling so good from inside that I'm feeling that I'm very healthy now. I can do a lot of things now. Before before that, I always get up. I always tell my husband, this back is paining, my hand is paining, my legs are paining. Then he always tell me from 2-3 days, what happened, Richa? You're not saying anything that this is paining. I said, no, nothing, it's paining. And the same thing I told my mother, and my mother is also doing the same thing. And she's also happy, and she's telling me, yes, Richa, it is not paining now. Lovely. So it is too good. Thank you for this. Thank you so much, Richa. And you just reminded me that I have still not posted the meditation on health, and I will do that today itself. So just listen to that meditation, because it takes you through all your body parts, and it makes you show the gratitude for every part. Because I have generally a problem in my legs, because I have it's a calcium problem. It is very less. So right now, whenever I sleep at night, now it starts paining. Whenever it happens, whenever it is so hot, it's raining, and every time it happens, my hand starts paining, my legs are started paining. But after giving this gratitude, this is the best part, that it is not paining, and I'm feeling very good. And day before yesterday, also 2-3 days before, this left hand was paining a lot in the morning when I got up, and I have to listen. I have to come to this WhatsApp. So I said, let's do it that. And I did it, and after 5 minutes, it was stopped paining only. So nice to hear that, and on that note, I'll just say that our body and body parts are like little children. And kai baar kya hota hai, certain parts of our body just want a little attention. So what happens is, and I'll tell you, this was something that happened with me when I was taking all these online classes last year, and we were doing a number of other book readings as well. My shoulders were hurting quite a bit. And so I woke up in the morning and I spoke to my shoulder like you speak to your child. And I said, you know what, you've been so supportive and you've been helping me out so much. I promise I will take you for a back massage. I promise I will take you for a head massage. I told my shoulder this, and you won't believe it. Within a few seconds itself, I felt so good. It's as if, wo bachcha bahut der se aapka attention mang raha hai, and the minute you give it a little attention, it's absolutely fine. So it's gone away. In 5 minutes, this hand was, I said, what is this? It's the pains have gone away only. There was no pain. There was really no pain. Lovely. Thank you. It's really thank you. Now, to anybody, whatever anybody is there, I always, the second word, if anything, my son is doing anything, Yash, thank you. Mama, how many times you will say? I said, like that only. You also say like this. Yes. Well, okay, Mama, I will also say. Lovely. So happy to hear that. Thank you so much. One more thing, Ruchi ma'am. अभी जब मैं thank you बोलती हूँ ना, तो मेरे दोनों बच्चे बोल देंगे, मम्मा पापा अभी देखना मम्मी 3 बार thank you बोलेगी. मम्मा को पता नहीं क्या हो गया, everyday 3 बार thank you बोलती है. तो even my kids know के 3 बार मम्मा thank you बोलेगी. And when I sat and prepared those things, money का वो thank you note, gift का note, तो my younger child, he is 6-year-old, तो वो भी बैठ गया, मम्मा आप क्या बना रहे हो, मुझे दे दो, मैं भी कॉपी कर लूंगा. तो I have just kept that on the fridge. तो रोज आके क्या आप रोज ये पढ़ते हो, and then he also reads that thank you बोल के चले जाता है. Even he has started following so much. हाँ, he has started. Now he knows mama will thank you बोलेगी, mama 3 times पक्का बोलेगी करके. Lovely. Thank you. Farzana, do you want to share something and then we'll wrap up? I just saw it's 8:32. Yes, go ahead. Please share. Yeah. Unmute yourself. I can't see her on my screen, so. I can see her, but 1 second. She needs to unmute. I think there's some issue. Okay. Farzana, is it okay if you share tomorrow morning? Yeah? Because it's getting late. It's 8:33. So we'll just call it a day, and thank you everyone. And I wish and hope and pray that you find your 3 people and you sit down and write not 5 things, but 10 things that you're grateful to them for.
And if you want, share it with them, express it to them. If not, even that is fine. Today, it is only about making lots and lots of deposits in your own bank account. On that note, thank you so much. And I will see you all tomorrow morning at 7.